अस्सलामुअलैकुम। वोकेबलरी इंग्लिश की बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक टेस्ट में जब वोकेबलरी आपके पास कम हो तो आप एक्सेल नहीं कर सकते। इसीलिए आज मैंने एक नई जर्नी शुरू की है। इसमें हम एडवांस वोकेबलरी लेंगे इंग्लिश का और उसको उर्दू में तर्जुमा करेंगे, इंग्लिश में करेंगे और सेंटेंस में भी यूज़ करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले तो आप लोग एक पेन लें, एक कॉपी लें कि जो जो वर्ड्स हम करते जाएं आप लोग उसको नोट करते जाएं, तो इंशाल्लाह इट वुड हेल्प यू इन ऑल एग्जामिनेशंस। और इसके अलावा चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। चलें शुरू करते हैं। वर्ड फर्स्ट है जी एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब है मुखफ़फ़, मतलब एब्रीविएशन से लिया गया है और इसका मतलब है कम करना। कम करना यानी शॉर्टन भी इसकी मीनिंग है। इसका एग्जांपल है जी, बिकॉज वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम द लेक्चरर हैड टू एब्रीविएट हर स्पीच। एब्रीविएट हर स्पीच, उसको अपना जो स्पीच है कम करना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। अबेट। अबेट का मतलब है कम करना। सबसाइड, मॉडरेट, मॉडरेट कम करना या सबसाइड में ख़त्म करना भी अबेट कहलाता है। एग्जाम्पल है जी, रादर देन लीविंग इमीडिएटली दे वेटेड फॉर द स्टॉर्म टू अबेट। स्टॉर्म टू अबेट मतलब तूफान के डलने का इंतज़ार किया। एबॉर्टिव। एबॉर्टिव एबॉर्शन से है, इसकात हमल भी उसको कहते हैं, और अबॉर्टिव का मतलब है अनसक्सेसफुल भी। ठीक है, मतलब कामयाब ना होना, या फ्रूटलेस भी इसकी एक मीनिंग है। एग्जाम्पल इसका है जी, वी हैड टू अबैंडन आवर अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स। ठीक है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स या अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब मतलब, कंप्लीट, टोटली अनलिमिटेड। ठीक है, एग्जाम्पल हैं जी, although the king of Siam was an absolute monarch. Absolute monarch मतलब complete बादशाह। ठीक है, he did not want to behead his unfaithful wife without absolute evidence of her infidelity. Absolute evidence, complete evidence। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट है जी खुलासा। उर्दू मीनिंग है खुलासा। थ्योरेटिकल भी है, नॉट कंक्रीट को भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो कंक्रीट ना हो। ठीक है, नॉट रिप्रेजेंटेशनल भी कहलाता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है, टू हिम हंगर वाज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ही हैड नेवर मिस्ड अ मील। एब्यूसिव। एब्यूसिव गाली देने वाले को भी कहते हैं, और एब्यूसिव बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग को भी कहते हैं। ठीक है, या फिजिकली हार्मफुल। एब्यूसिव पेरेंट्स। एब्यूसिव पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, उन पेरेंट्स को एब्यूसिव पेरेंट्स कहते हैं। ठीक है। एक्सेलरेट तेज़ करना। मूव फास्टर। In our science class, we learn how falling bodies accelerate. Falling bodies accelerate, falling bodies तेज चलती हैं। ठीक है। Accessible काबिल रसाई, बहुत इजी है, easy to approach, obtainable। Example है, we asked our guide whether the ruins were accessible on foot. ठीक है, हमने अपने गाइड से पूछा कि खंडरात तक हम पैदल जा सकते हैं। एक्सेसिबल ऑन फुट, क्या वहाँ तक जाना पॉसिबल है। एक्सेसरी लवाजमात को कहते हैं। एडिशनल ऑब्जेक्ट, यूजफुल बट नॉट एसेंशियल थिंग। एग्जाम्पल है, she bought an attractive handbag as an accessory for her dress. Abscond. Abscond मफरूर। ठीक है, depart secretly and hide।
मफरूर यही करता है, चुपके से निकलता है और छुप जाता है। द टेलर एब्सकॉन्डेड, जो कैशियर है वो भाग गया, मफरूर हो गया। विद द बॉन्ड्स एंड वॉज नॉट फाउंड, बॉन्ड्स लेके मफरूर हुआ। एबेरेंट, एबेरेंट का मतलब है एबनॉर्मल, ठीक है, और डीविएंट, जो बताए हुए रास्ते से पे नहीं चलता, जो दिमाग जिसका ठीक ना हो, एबनॉर्मल। Given the aberrant nature of the data, aberrant nature of the data का मतलब ये है कि जो डेटा है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कंसाइज नहीं है। कहीं पे डेटा हमारा ऊपर है, कहीं पे नीचे है। अगर हम बर्थ रेट का डेटा निकालें, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, एबनॉर्मल है, तो इसको एबेरेंट कहते हैं। एबियंस, एबियंस का मतलब है इल्तवा, ठीक है, सस्पेंडेड एक्शन। The deal was held in abeyance until her arrival. Held in abeyance का मतलब है उसको इल्तवा में रखा गया जब तक वो वापस ना आए। Adamant, adamant अटल, hard, inflexible, जो एक बात पे अड़ जाए उसको adamant कहते हैं। He was adamant in his determination to punish the wrongdoer. वो अपने डिटर्मिनेशन में अटल था, ठीक है। Adulterate, मिलावट करना। Make impure by mixing with baser substances, ठीक है। It is a crime to adulterate food. फूड एडल्टरेशन को कहते हैं खुराक में मिलावट। विदाउट इन्फॉर्मिंग द बायर। एडवर्सिटी, मुसीबत। पॉवर्टी को भी कहते हैं, मिसफॉर्चून को भी कहते हैं, ठीक है, बदकिस्मती को भी कहते हैं, गुर्बत को भी एडवर्सिटी कहते हैं। Example, we must learn to meet adversity gracefully. हमें सीखना चाहिए कि गुर्बत में, मुसीबत में, बुरे वक्त में किस तरह हम अपने आप को कंट्रोल करें। अबेस, अबेस का मतलब है कम करना, लोअर, डिग्रेड, किसी के ग्रेड्स कम करना, ह्यूमिलिएट, किसी को बेइज्जत करना, अबेस। एग्जाम्पल, Anna expected to have to courtesy to the king of Siam when told to cast herself down on the ground before him. However, she refused to abase herself. She refused to abase herself. उसने हुक्म नहीं माना और अपनी बेइज्जती नहीं होने दी। अबेश, अबेश का मतलब है एम्बैरस, किसी को शर्मिंदा करना। He was not at all abashed by her open admiration. उसने उसकी ओपन एडमायरेशन की जिससे वो शर्मिंदा नहीं हुआ। एब्डिकेट, तर्क करना, छोड़ देना। रिनाउंस यानी ख़त्म करना। गिव अप, जिस तरह मैंने कहा छोड़ देना। एग्जाम्पल, when Edward VII abdicated the British throne, जब एडवर्ड 7 ने ब्रिटिश थ्रोन को छोड़ा, he surprised the entire world. abet, abet का मतलब है हेल्प करना, असिस्ट करना, मदद करना। usually in doing something wrong, किसी गलत चीज़ में किसी का मदद करना, हेल्प करना,
उसका दोस्त बन जाना। एग्जाम्पल, शी वॉज अनविलिंग टू अबेट हिम, उसने इनकार किया उसका साथ देने से। इन द स्विंडल ही हैड प्लान्ड, जो भी उसने गलत प्लानिंग की थी उसमें उसका हेल्प करने से इनकार कर दिया। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब है रिच्ड। रिच्ड का मतलब है जो ऐसे बंदे के बारे में है जो जिसमें इज्जत रिस्पेक्ट ना हो, जो बदकिस्मत हो, जिसको सबने टुकरा दिया हो, जिसको हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं मनहूस। एब्जेक्ट का मतलब है रिचड, मनहूस। ठीक है। On the streets of New York, the homeless live in abject poverty. Abject poverty है जी complete poverty, मतलब गुर्बत की आखिरी हद। Abject poverty, ठीक है। Huddling in doorways to find shelter from the wind. Abjure, abjure का मतलब भी है तर्क करना, renounce करना। Example, he abjured his allegiance to the king. Ablution, ablution वज़ू करने को कहते हैं या हाथ धोना, इसको भी ablution कहते हैं। Example, his daily ablutions were accompanied by loud noises that he humorously labeled opera in the bath. इसको हम सिंपली भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं, The Muslims perform ablution before every prayer. Easy sentence है, The Muslims perform ablution before every prayer. Abnegation, मनसूखी। ठीक है। Renunciation, छोड़ देना। Self-sacrifice. Example, though Rodolph and Duchess Flavia loved one another, their love was doomed, for she had to wed the king. Their act of abnegation was necessary to preserve the kingdom. यहाँ पे abnegation का मतलब है self sacrifice, यानी डचेस फ्लेविया ने कुर्बानी दी किंग से शादी करके, और एब्निगेशन ये उसने सेल्फ सैक्रिफाइस किया। एबोमिनेट, मकरूह, लोथ, हेट। ठीक है। Example, Moses scolded the idol worshippers in the tribe because he abominated the custom. वो उस कस्टम को लाइक नहीं करते थे। Abrasive, कूचने वाला। Rubbing away, tending to grind down. Just as abrasive cleaning powders can wear away a shiny finish, abrasive remarks का मतलब है जो जिसकी abrasive cleaning जो साफ करते हैं रगड़ के, उसको हम कहते हैं। और rubbing away या किसी को रगड़ के कोई चीज़ मिटा देना, उसको कहते हैं abrasive। एब्रोगेट तोड़ना, मनसूख करना। एबॉलिश, ख़त्म करना। इसका एग्जाम्पल है, He intended to abrogate the decree. उसका इरादा था कि जो हुक्म है, डिक्री है, उसकी हुक्म अदूली करें जो उसके प्रेडिसेसर ने बनाए थी। ठीक है। So he intended to abrogate the constitution भी होता है। जिस तरह मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, तो इसको हम कह सकते हैं मुशर्रफ abrogated the constitution of 1973. Absolve,
एब्सॉल्व का मतलब है मुआफ करना, पार्डन करना। एग्जाम्पल, द फादर कन्फेसर एब्सॉल्व्ड हिम ऑफ हिज सिंस। ठीक है। एब्सटेन, परहेज करना, दूर रहना, रिफ्रेन। एबट, बॉर्डर अपॉन, एडजॉइन। एग्जाम्पल, वेयर आवर स्टेट्स अबट। अबट का मतलब है दो स्टेट्स जो आपस में मिलते हैं, या मिलना, या दो चीज़ों का एक दूसरे के साथ करीब होना, उसको अबट कहते हैं। आवर स्टेट्स अबट मतलब हमारे दो ममालिक एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। एबिस्मल, एबिस्मल का मतलब है खराब, बॉटमलेस। Example, his arrogance is exceeded only by his abysmal ignorance. Exceed, तस्लीम करना, agree. Acclimate, मवाफ़िक़त। Adjust to climate or environment, उसको कहते हैं acclimate. One of the difficulties of our present age is the need of travelers to acclimate themselves to their new and open strange environment. इसको हम simply ये कर सकते हैं, he has to learn to acclimate to his environment. He has to learn to acclimate to his environment. Acclivity, एक्लिविटी है जी शार्प अप स्लोप ऑफ हिल। ठीक है। द कार कुड नॉट गो अप द एक्लिविटी इन हाई गियर। एक्लिविटी है ऊपर जाना शार्प स्लोप में या चढ़ना। ठीक है। एक्कोलेट, एक्कोलेट किसी की तारीफ करना। इन द हाईएस्ट एक्कोलेट, ठीक है, बहुत बड़ी तारीफ या एजाज को कहते हैं एक्कोलेट। एकॉर्ड, एकॉर्ड एग्रीमेंट को कहते हैं। एग्जाम्पल, शी वॉज इन कंप्लीट एकॉर्ड विद द वर्डिक्ट। एक्कॉस्ट, approach and speak first to a person। ठीक है, किसी के साथ बातचीत करना सबसे पहले। When the two young men accosted me, मतलब जब दो यंग बंदे मुझसे मिले और मुझसे बात की। Accoutcher, accoutcher कहते हैं equip, किसी को equip करना या उसको जो ज़रूरी आलात हैं देना। The fisherman was accoutred with the best that the sporting goods store could supply. The fisherman was accoutred, यानी फिशरमैन के पास सारे ज़रूरी आलात थे। Accretion, accretion कहते हैं बढ़ावे को या ग्रोथ को। The accretion of wealth marked the family's rise in power. Accrue, accrue का मतलब है जमा करना। Example, you must pay the interest that has accrued on your death। मतलब आपने जो लोन लिया है उस पे जो सूद जमा हुआ है उसको कहते हैं accrue। So, एग्जाम्पल को दोबारा पढ़ते हैं। You must pay the interest that has accrued on your death as well as the principal sum. Acidulous, slightly sour, तेजाबी। ठीक है। James was unpopular because of his sarcastic and acidulous remarks. एक्मी, एक्मी कहते हैं पिनिकल, पीक, यानी
किसी का हाईएस्ट पॉइंट, या अगर करियर है किसी का, कि करियर के टॉप मुकाम पे किसी का होना, उसको एक्मी कहते हैं। या अगर किसी को बीमारी है तो ये आखिरी हद को एक्मी कहते हैं। एग्जाम्पल, Will's success in Citizen Kane marked the acme of his career. तो हम सिंपली इस तरह यूज कर सकते हैं, Ali is at the acme of his career as he has now been appointed as the Director General. Acquiesce, तस्लीम करना। Assent, agree। ठीक है। I, उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं, although she appeared to acquiesce to her employee's suggestion, या इसको she agreed to acquiesce to her son's demands। ठीक है। Acquittal, acquittal किसी को बरी करना, जिस तरह जजेस बरी करते हैं, एक्विट करते हैं एक्यूज्ड को, उसको एक्विटल कहते हैं। एग्जाम्पल, his acquittal by the jury surprised those who had thought him guilty। Acrid, acrid का मतलब है तेज, sharp, bitterly pungent। Example, the acrid odor of burnt gunpowder। The acrid odor मतलब तेज बू। The acrid odor of burnt gunpowder filled the room after the pistol had been fired। Acrimonious, talkh, stinging, caustic। Example, his tendency to utter acrimonious remarks alienated his audience। Actuarial, actuarial का मतलब है calculating, pertaining to insurance statistics, calculate करना। Example, according to recent actuarial tables, life expectancy is greater today than it was century ago। Actuate, फाल करना, किसी को मोटिवेट करना, हौसला देना। Example, I fail to understand what actuated you to reply to this letter so nastily। Equity, sharpness को कहते हैं equity। Example, in time his youthful acuity of vision failed him and he needed glasses। Acumen, जहानत को कहते हैं acumen। Mental keenness, ठीक है। His business acumen, उसकी बिजनेस से रिलेटेड जो समझ बूझ है उसको बिजनेस acumen कहते हैं। Adage, कहावत को कहते हैं adage। वाइस सेइंग या प्रोवर्ब, उसको हम adage कहते हैं। Example, there is much truth in the old adage about fools and their money। ठीक है। Addendum, ज़मीमा या एडिशन या अपेंडिक्स टू अ बुक को कहते हैं addendum। अडल, अडल का मतलब है मडल, ड्राइव क्रेजी या किसी को कंफ्यूज करना। एडल कहते हैं कंफ्यूज करना। ठीक है।
The idiotic plan is confusing enough to addle anyone. Adherent, मानने वाला, supporter, follower. Example, in the wake of the scandal, the senator's one-time adherent quietly deserved him. Adjunct. Adjunct का मतलब है मुल्हिका, नज़दीक तरीन. Something attached to but holding an inferior position. I will entertain this concept as an adjunct to the main proposal. Adjuration, इकरार करना, solemn urging. Example, her adjuration to tell the truth did not change the witness' testimony. Adjutant. Adjutant का मतलब है staff officer assisting the commander या assistant. Assistant को कहते हैं adjutant. इसको हम सिंपली इस तरह यूज कर सकते हैं. The colonel advised his assistant to brief the audience about the matter. Admonish, नसीहत करना, warn करना. Reprove. Reprove का मतलब है मुखालफत करना. Example, he admonished his listeners to change their wicked ways. उसने अपने listeners को नसीहत की कि अपने wicked ways को change करें. Adorn, आरास्ता करना, decorate करना, खूबसूरत बनाना. Example, wall paintings and carved statues adorned the temple. Adroit, chust, skillful, होशियार. Example, his adroit handling of the delicate situation pleased his employers. Adulation, अय्याशी को कहते हैं, फ्लैटरी को भी कहते हैं, और किसी को इनकरेज करना, एडमायर करना, इसको कहते हैं एडुलेशन. The rock star thrived on the adulation of his groupies and yes men. Advent. Advent आमद को कहते हैं, अराइवल को कहते हैं. इसको हम सिंपली इस तरह यूज कर सकते हैं. The food will start upon his advent. Adventitious, मुहिम जोई. एक्सीडेंटल को भी ये कहते हैं. मुहिम जोई को एडवेंचर से हैं, लेकिन इसके एक मीनिंग एक्सीडेंटल भी है, कैजुअल भी है. ठीक है. एग्जाम्पल, he found this adventitious meeting with his friend extremely fortunate. Adversary, मुखालिफ को कहते हैं. Enemy, दुश्मन को कहते हैं. Adverse, मुखालिफ, unfavorable, hostile या in the opposite direction जो चीज़ है उसको adverse कहते हैं. Adverse circumstances compelled him to close his business. Advert, इश्तिहार देना. एडवर्टाइजमेंट से एडवर्ट है. Advocate,
वकील को कहते हैं और वकालत को भी कहते हैं। वकालत का मतलब है एडवोकेट, अर्ज करना, किसी के लिए प्लीड करना या किसी के लिए वकालत करना को भी एडवोकेट कहते हैं। एग्जाम्पल, द एबोलिशनिस्ट एडवोकेटेड फ्रीडम फॉर द स्लेव्स। सिंपली इसको हम इस तरह कर सकते हैं, अली एडवोकेटेड फ्रीडम फॉर द स्लेव्स। एजिस, शील्ड को कहते हैं, डिफेंस को कहते हैं। ठीक है, ये पुराने फिल्मों में अक्सर ये वर्ड आता है। अंडर द एगीज ऑफ द बिल ऑफ राइट्स वी एंजॉय आवर मोस्ट ट्रेजर्ड फ्रीडम्स। अफेबल, मिलनसार, courteous. Example, although he held a position of responsibility, he was an affable individual and could be reached by anyone with a complaint. Affected, जो मुतासिर हुआ हो उसको affected कहते हैं, लेकिन affected का मतलब affectation से भी है। affectation का मतलब है जो बनावटी हो, आर्टिफिशियल हो, प्रिटेंडेड हो। यहाँ पे इसके मीनिंग आर्टिफिशियल से ही हैं। एग्जाम्पल, इज अफेक्टेड मैनरिज्म। अफेक्टेड मैनरिज्म यानी आर्टिफिशियल मैनरिज्म इरिटेटेड मैनी ऑफ अस। ये मैं ऑफ अस नहीं है, मैनी ऑफ अस है। एफिडेविट, एफिडेविट को कहते हैं, ये इस पे अफसोस लिखा है लेकिन अफसोस नहीं है। ये रिटन स्टेटमेंट को एफिडेविट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अंडर oath, the court refused to accept his statement unless he presented it in the form an affidavit. Affiliation, वाबस्तगी, association. Affinity, वाबस्तगी, या affinity का मतलब है kinship, रिश्ते को भी कहते हैं affinity. She felt an affinity with all who suffered, their pains were her pains. मतलब इसका ये है कि एक फैमिली की तरह उसने दूसरों के गम को फील किया। Affirmation, इस बात या positive assertion, confirmation, solemn pledge by one who refuses to take an oath. मस्बत जवाब देना। ठीक है। affix, चस्पा करना, किसी चीज़ पे कुछ लगा देना, अटैच कर देना। और add on या fasten, इसको कहते हैं affix. Example, first the registrar had to affix his signature to the license, then he had to affix his official seal. इसको part 2 को हम simply ले सकते हैं, Ali had affixed his official seal. Affluence, दौलतमंदी, abundance, wealth और rich लोगों के बारे में है। affluence मतलब बहुतात होना। Example, foreigners are amazed by the affluence and luxury of the American way of life. Affront, तौहीन आमेज, insulting या insult करना। offend, मुखालफत करना। Accustomed to being treated with respect, Miss Challoner was affronted by Vidal's offensive behavior. Agape, open mouth. She stared agape. Agape का मतलब है
खुले मुंह रह जाना, ठीक है। अ गैप एट द मैनी स्ट्रेंज एनिमल्स इन द जू, यानी ये उसके बारे में है कि बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना, अ गैप कहते हैं उसको। इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया है कि शी स्टेयर्ड अ गैप एट मैनी स्ट्रेंज एनिमल्स, मतलब शी स्टेयर्ड वो देख रही थी, अ गैप बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ, खुले मुंह के साथ, एट द मैनी स्ट्रेंज एनिमल्स इन द जू। एजेंडा, आइटम ऑफ बिजनेस को एजेंडा कहते हैं। एग्लोमीरेशन, जमा कर देना, कलेक्शन, हीप। एग्रेंडाइज, बड़ा करना, इंक्रीज, इंटेंसिफाई, रेज इन पावर, या बढ़ा चढ़ा के बताना, उसको एग्रेंडाइज कहते हैं। एग्रीगेट, इजी है, मजमूई, सम या टोटल को एग्रीगेट कहते हैं। अगास्ट, अगास्ट कहते हैं घबराहट को या घबरा जाना, उसको अगास्ट कहते हैं। अगास्ट का मतलब इंग्लिश में है हॉरिफाइड। एग्जाम्पल, ही वॉज अगास्ट एट द नर्व ऑफ द स्पीकर who had insulted his host. Agility का मतलब है nimbleness, तेज होना। Agitate, मुश्ताइल करना, stir up, disturb करना, ठीक है। उकसाना, her fiery remarks agitated the already angry mob. एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक उसको कहते हैं जो खुदा को नहीं मानते, ठीक है। एगॉग, एगॉग का मतलब है हाईली एक्साइटेड, इंटेंसली क्यूरियस, बहुत ज़्यादा खुश होना, उसको एगॉग कहते हैं। एग्जाम्पल, वी वर ऑल एगॉग एट द न्यूज़ that the celebrated movie star was giving up his career in order to enter a monastery, या simply इसको हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, we were all agog at the accomplishment of Mr. Ali. Agrarian, एग्रीकल्चर से एग्रेरियन है ज़रई, pertaining to land or its cultivation, agrarian. Alacrity, शौक से, cheerful, promptness. Example, he demonstrated his eagerness to serve by his alacrity in executing the orders of his master. इसको सिंपली इस तरह यूज कर सकते हैं, he is following the orders of his master with alacrity. Alchemy, कीमिया, medieval chemistry. The changing of baser metals into gold was the goal of the students of alchemy. Alcove, nook, recess. Example, though their apartment lacked a full-scale dining room, an alcove adjacent to the living room made an adequate breakfast nook for the young couple. Alias, उर्फ, an assumed name, ठीक है। जॉन स्मिथ एलियस वॉज बॉब जोनास, मतलब जॉन स्मिथ का उर्फ था बॉब जोन्स। एलिनेट, अलग करना, दूर करना, दुश्मन बनाना, ये है एलिनेट। मेक हॉस्टाइल,
separate. Example, her attempts to alienate the two friends failed. Elementary, ग़िज़ाइयत से मुतालिक elementary, supplying nourishment. The alimentary canal in our bodies is so named because digestion of food occurs there. Alimony, batta, payment made to an ex-spouse after divorce. Example, because Tony had supported Tina through medical school, on the divorce he asked the court to award him $500 a month in alimony. Alimony खैरात को भी कहते हैं. एले, ठीक है. एले का मतलब है दूर करना, काम करना, पैसिफाई, किसी को हौसला देना. The crew tried to allay the fears of the passengers by announcing that the fire had been controlled. Allay the fears का मतलब है उनकी जो खदशात हैं उनको दूर करना. जिस तरह मैंने कहा, कम करना, दूर करना, हौसला देना. Allege, इल्ज़ाम लगाना, state without proof. Example, it is alleged that she had worked for the enemy. Allegory, tamsil, story in which characters are used as symbol. Fable, allegory एक art of writing है इंग्लिश में, जिसमें हम क्या करते हैं, कैरेक्टर यूज करते हैं as symbols. Pilgrim's Progress is an allegory of the temptation and victories of human soul. Alleviate, कम करना, relieve, ठीक है. Example, this should alleviate the pain. Alliteration, इंतिशार, repetition of beginning sound in poetry. अच्छा, alliteration का इन्होंने उर्दू वाला तर्जुमा जो है वो लफ्ज़ी किया है, लेकिन इसका इंग्लिश लिटरेचर में एक मीनिंग है रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग साउंड इन पोइट्री. पोइट्री में कोई वर्ड्स बार बार कहना, जिस तरह उर्दू में भी हैं, पश्तो में भी इस तरह के हैं, जिसमें हम जब एक नज़म लिखते हैं उसमें कुछ वर्ड्स बार बार कहते हैं, उसको एलिट्रेशन कहते हैं. एग्जाम्पल, द फरो फॉलोड फ्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. एलॉय, कूट, mixture is of metals. Example, alloy of gold are used more frequently than pure metal. Allude, इशारा करना. Refer indirectly. Example, try not to allude to this matter in his presence because the topic annoys him. Allure, रोग़बत, entice, attract, किसी को अपनी तरफ राग़िब करना. Example, allured by the song of the sirens, the helmsman steered the ship towards the reef. Allusion, इशारा करना, indirectly refer करना. Example, the allusions to mythological characters in Milton's poems bewilder the reader who has not studied Latin. Alluvial, pertaining to soil deposits left by running water. Alluvial, the farmers found the alluvial deposits at the mouth of the river very fertile. Aloof, अलग तलग, apart, reserved, अवाम से दूर, अपनी दुनिया में मगन. Example, shy by nature, she remained aloof while all the rest conversed. Aloft, ऊंचा,
upward. Example, the sailor climbed aloft into the rigging. Altercation, jagda. Noisy quarrel. Example, throughout the altercation, not one sensible word was uttered. Altruistic, parhezgari, selfishly generous, concerned for others. Example, in providing tutorial assistance and college scholarships to hundreds of economically disadvantaged youths, Yugni Lang performed a truly altruistic deed. Altruistic का मतलब है generous, ठीक है, और दूसरों की हेल्प करना. परहेजगारी भी है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली इसके मीनिंग है generous, ठीक है, या किसी का हेल्प करना. altruistic deed यानी किसी की मदद करना, ठीक है. amalgamate, यकजा करना. combine, unite. Example, the unions will attempt to amalgamate their groups into one national body. Amass, jama karna, collect. Example, the measure's aim is to amass and hoard as much gold as possible. Amazon, Amazon, female warrior. Example, ever since the days of Greek mythology, we refer to strong and aggressive women as Amazons. Ambidextrous, mutazad, capable of using either hand with equal ease. दोनों हाथों से जो लिख सकते हैं उनको ambidextrous कहते हैं. Example, a switch hitter in baseball should be naturally ambidextrous. Ambience, mahol, environment, atmosphere. Example, she went to the restaurant not for the food but for the ambience. Ambiguous, mubham, unclear, doubtful, shakki. Ambivalence, abham, the state of having contradictory or conflicting emotional attitudes. Example, torn between loving her parents one minute and hating them the next, she was confused by the ambivalence of her feelings. Simply इसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं, she has been taken away by the ambivalence of her feelings. Amble, moving at an easy pace, आराम से जाना. Example, when she first mounted the horse, she was afraid to urge the animal to go faster than a gentle amble. Ambrosia, food of the gods. Example, ambrosia was supposed to give immortality to any human who ate it. Ambulatory, able to walk, जो चल सकता हो. Example, he was described as an ambulatory patient because he was not confined to his bed. Ameliorate, बेहतर करना, improve करना, बेहतरी लाना. Example, many social workers have attempted to ameliorate the conditions of people living in the slums. Amenable, tayyar, readily managed, willing to be led.
Example, he was amenable to any suggestions that came from those he looked up to. He resented advice from his inferiors. Amend, तरमीम करना, correct, change, generally for the better. Amenities, सहूलियात, features. Amiable, मिलनसार, agreeable, lovable. His nature is amiable. Simple sentence है. Amicable, दोस्ताना, friendly. Example, the dispute was settled in an amicable manner with no harsh words. Amiss, गलत, wrong, faulty. Example, seeing her frown, he wondered if anything were amiss. Amity, dosti, friendship. Student exchange programs such as the Experiment in International Living were established to promote international amity. Yes, simply, Pak Turkey's amity is beyond all doubts. Amnesia, भूलने की बीमारी को amnesia कहते हैं. Loss of memory. Example, because she was suffering from amnesia, the police could not get the young girl to identify herself. Amnesty. Amnesty pardon को कहते हैं. When his first child was born, the king granted amnesty to all in person. एमनेस्टी दो तीन किस्म की है. एमनेस्टी ये भी है कि जब FBI कार्स पे एमनेस्टी देते हैं तो वो जो रजिस्टर्ड नहीं होती गाड़ियाँ वो रजिस्टर कर सकते हैं लोग. इमरान खान की हुकूमत में इन्होंने एमनेस्टी दी थी उस पर रियल एस्टेट पे कि जो लोग जो पैसे लेके आते हैं उनसे नहीं पूछा जाएगा कि उस पर टैक्स दिया है या नहीं दिया, वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकते हैं. तो इसको एमनेस्टी कहते हैं. एमनेस्टी इसको भी कहते हैं कि जब लोग यहाँ से चले जाते हैं यूरोप और वहाँ पे एमनेस्टी के लिए क्लेम करते हैं, उसको भी एमनेस्टी कहते हैं. ठीक है. एमोरल, अखलाकी, गैर अखलाकी, नॉन मोरल. एमोरल, नॉन मोरल, ये अखलाकी नहीं है, गैर अखलाकी है. ठीक है. The amoral individual lacks a code of ethics. Amorous, dilkash, loving. Example, Don Juan was known for his amorous adventures. Amorphous, besakhta, shapeless, vague, indeterminate. Example, John was subject to panic attacks that left him prey to vague, amorphous fears. Amorphous fears. ठीक है. Amphibian, able to live both on land and in water. उस चीज़ के बारे में है जो ज़मीन पे भी टाइम गुजार सकता है और पानी में, उसको एम्फीबियन कहते हैं, जिस तरह फ्रॉग्स है. Amphitheater, oval building with tiers of seats. एक oval shaped building जिसमें seats होते हैं उसको कहते हैं amphitheater. Example, the spectators in the amphitheater cheered the gladiators. Ample, काफी, abundant. Example, he had ample opportunity to dispose of his loot before his police caught up with him. Amplify, बढ़ाना, बढ़ावा देना, enlarge. Amputate, काटना, cut off part of body, prune.
Example, when the doctors had to amputate Ted Kennedy's leg to prevent the spread of cancer, he did not let the loss of his leg keep him from participating in sports. Amok, in a state of rage. जब गुस्से में एक बंदा होता है उसको amok कहते हैं. Example, the police had to be called in to restrain him after he ran amok in the department store. Ali ran amok in the departmental store. Simply हम इस तरह कर सकते हैं. Amulet, तावीज़, charm, talisman. खूबसूरती को amulet कहते हैं. Around her neck she wore the amulet that the witch doctor had given her. यहाँ पे इसका स्पेसिफिकली मीनिंग तावीज़ ही है, amulet. ठीक है. Anachronism, something or someone misplaced in time. Shakespeare, example, Shakespeare reference to clocks in Julius Caesar is an anachronism. No clocks existed in Caesar's time. Analgesic, causing insensitivity to pain. Analgesic का मतलब होता है ये पेन के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको एनाल्जेसिक कहते हैं. Analogous, मुताबिकत, comparable. Example, she called our attention to the things that had been done in an analogous situation and recommended that we do the same. Analogy, tashbih, similarity, parallelism. Your analogy is not a good one because the two situations are not similar. Anarchist, person who rebels against the established order. Anarchist उसको कहते हैं जो सोशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ जाता है या जो कानून के ख़िलाफ़ जाता है उसको एनार्किस्ट कहते हैं. और एनार्किस्ट वाले सिस्टम को एनार्की कहते हैं. एग्जाम्पल, ओनली द टोटल overthrow of all government regulations would satisfy the anarchist. Anarchy, absence of governing body, state of disorder. ठीक है, हुकूमत का न होना एनार्की कहलाता है या हुकूमत के रेट का न होना भी एनार्की कहलाता है. एग्जाम्पल, assassination of the leaders led to a period of anarchy. Anathema, solemn curse, someone or something that is despised. Anathema किसी ऐसे बंदे के बारे में है जिसको बद्दुआ दी गई हो. Example, he heaped anathema upon his foe. Anathematize, anathematize कहते हैं गाली को, कर्स को. Example, the high priest anathematized the heretic. Anchor, secure or fasten firmly, be fixed in place. Example, we set the post in concrete to anchor it in place. Ancillary, zeli, serving as an aid or accessory, auxiliary. Anecdote, किस्से को कहते हैं, छोटी कहानी को कहते हैं. Short account of an amusing or interesting event. Example, rather than make concrete proposals for welfare reform, President Reagan told anecdotes about poor people who became wealthy despite their impoverished backgrounds. Anemia, एनीमिया उस बीमारी को कहते हैं जिसमें खून की कमी पैदा होती है, उसको एनीमिया कहते हैं. सिंपली इसको हम लिख सकते हैं
Ali is suffering from anemia. एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा को एनेस्थेटिक कहते हैं. Substance that removes sensation with or without loss of consciousness. वो दवा जो बंदे को बेहोश कर देता है उसको एनेस्थेटिक कहते हैं. Example, his monotonous voice acted like an anesthetic. His audience was soon asleep. Anguish, aziyat, acute pain, extreme suffering. Angular, kuniyi, sharp-cornered, stiff in manner. Example, his features, though angular, were curiously attractive. Enamored version, critical remark. He resented the enamored versions of his critics, particularly because he realized they were true. Animated, mutaharrik, lively. Example, her animated expression indicated a keenness of intellect. Animosity, adawat, dushmani, active enmity. Example, he incurred the animosity of the ruling class because he advocated limitations of their power. Animus, dushmani, hostile feeling or intent. The animus of the speaker became obvious to all when he began to indulge in sarcastic and insulting remarks. Annals, tarikhein, records, history. Example, in the annals of this period, we find no mention of democratic movements. Anneal, reduce brittleness and improve toughness by heating and cooling. Example, after the glass is annealed, it will be less subject to chipping and cracking. Annihilate, fana karna, destroy karna, khatam karna. Example, the enemy in its revenge tried to annihilate the entire population. Annotate, tashreeh karna, comment, make explanatory notes. Annuity, salana, yearly allowance. Annal, mansukh karna, make void. Example, the parents of the eloped couple tried to annul the marriage. Anodyne, drug that relieves pain, opiate. पेन किलर को कहते हैं एनोडाइन. Anoint, मसह करना, consecrate. The prophet Samuel anointed David with oil, crowning him king of Israel. Anomalous, बेतरतीब, abnormal, irregular. Example, he was placed in the anomalous position of seeming to approve procedures that he despised. Anomaly, बेज़ाब्तगी, irregularity. Example, a bird that cannot fly is an anomaly. Anonymity, gumnami, state of being nameless. Antagonistic, mukhalif, hostile, dushman. Antecede, qabla waqt, precede. Example, the invention of radiotelegraph antecedes
anteceded the development of television by a quarter of a century. Antecedents, sabiqa, preceding events or circumstances that influence what comes later. Early life को antecedents कहते हैं. Ancestors' life को antecedents कहते हैं. Example, before giving permission for Drummy to marry Estella, Miss Havisham had a few questions about the young man's birth and antecedents. Antecedents का यहाँ पे मतलब आबाओ अजदाद भी है. Antediluvian, antiquated, ancient. Antediluvian का मतलब है पुराना, पुराने ज़माने का. ठीक है. Example, the antediluvian customs had apparently not changed for thousands of years. Anthropoid, man-like. ये anthropology से है anthropoid. Example, the gorilla is the strongest of the anthropoid animals. Anthropologist, Mahir Bashariyat, student of history and science of humankind. Anthropologists have discovered several relics of prehistoric humans in this area. Anthropomorphic, having human form or characteristics. Example, primitive religions often have deities with anthropomorphic characteristics. Anticlimax, let down in thought or emotion. Antipathy, दुश्मनी, aversion, disliking को कहते हैं antipathy. Example, his extreme antipathy to dispute caused him to avoid argumentative discussions with his friends. Antiquated, qadeem, obsolete, outdated. Example, accustomed to editing his papers on words processors full of thought, typewriters were too antiquated for him to use. Antiseptic, जरासीम कुश को antiseptic कहते हैं. Substance that prevents infections. Example, it is advisable to apply an antiseptic to any wound, no matter how slight or insignificant. Antithesis, mukhalafat, contrast, direct opposite of or to. Example, this tyranny was the antithesis of all that he had hoped for. Anvil, iron block used in hammering out matters. ये एक टूल है. Apathetic, बेहिस को apathetic कहते हैं. Indifferent. Example, he felt apathetic about the conditions he had observed and didn't care the fight against him. Apathy, बेहिसी, lack of caring, indifference. App, बंदर को app कहते हैं. Imitate or mimic. Example, he was suspended for a week because he had apped the principal in front of the whole school. App का मतलब है किसी की नकल उतारना. बंदर को भी कहते हैं app, लेकिन किसी का नकल उतारने को भी app कहते हैं. Aperture, opening, hole. Example, she discovered a small aperture in the wall. Aperture सुराख को कहते हैं. Apex, tip, summit, climax को apex कहते हैं. सबसे ऊपर वाली जगह को apex कहते हैं. Climax या summit. Example, he was at the apex of his career. Aphasia, loss of speech to the injury or illness.
जब कोई बंदा बोल नहीं सकता उसको एपेशिया कहते हैं. Example, aphorism. Pithy maxim. Example, an aphorism. An aphorism differs from an adage in that it is more philosophical or scientific. Apiary. A place where bees are kept. Apiary किसको कहते हैं? जहाँ पे bees रखे जाते हैं. ठीक है. Example, although he spent many hours daily in the apiary, he was very seldom stung by a bee. Aplomb, poise, composure. Example, Wellington's nonchalance and aplomb in the heat of battle always heartened his followers. Apocalyptic, prophetic, pertaining to revelations, especially of disaster. Apocryphal, untrue, made up. किसी चीज को जो made up हो, जो जानबूझ के बनाया गया हो, without proof, उसको कहते हैं apocryphal. Example, Tom invented apocryphal tales of his adventures in the big city. Apogee, highest point. Example, when the moon in its orbit is furthest away from the earth, it is apogee. Apoplexy, stroke, loss of consciousness followed by paralysis, उसको कहते हैं apoplexy. हार्ट स्ट्रोक वगैरह को एपोप्लेक्सी कहते हैं. एग्जाम्पल, he was crippled by an attack of apoplexy. Apostate, मुर्तद को apostate कहते हैं. One who abandons his religion, faith or political belief. Example, because he switched from one party to another, his former friends shunned him as an apostate. Apothecary. Apothecary का मतलब है ड्रगिस्ट. ठीक है. Example, in Holland, apothecaries still sell spices as well as ointment and pills. ठीक है. Apothecary किसको कहते हैं? ड्रगिस्ट को, जो दवाइयाँ बेचता है. ठीक है. Apotheme, pithy, compact saying. Example, proverbs are apothegms that have become familiar sayings. Apotheosis, deification, glorification. किसी चीज़ का glorify करना को apotheosis कहते हैं. Example, the Roman Empress Livia envied the late emperor his apotheosis. She hoped that on her death she too would be exalted to the rank of a god. Appall, dismay, shock. Example, we were appalled by the horrifying conditions in the city's jail. Appall का मतलब है हैरान होना. Apparition, ज़ाहिरी शक्ल. Ghost, phantom. Example, Hamlet was uncertain about the identity of the apparition that had appeared and spoke to him. Appease, मुतमईन करना. Pacify, soothe, मुतमईन करना. ठीक है. Example, we have discovered that when we try to appease our enemies, we encourage them to make additional demands. Appellation, appeal को कहते हैं appellation. Name, title. Example, he was amazed when the witches hailed him with his correct appellation. Append, शामिल करना, attach करना. Example, I shall append this chart to my report.
एप्लीकेशन दरख्वास्त, डिलिजेंट अटेंशन को भी कहते हैं एप्लीकेशन। एग्जाम्पल, प्लीज विद हाउ वेल टॉम हैड whitewashed the fence, Aunt Polly praised him for his application. Apposite, appropriate, fitting, relevant. Example, he was always able to find the apposite phrase, apposite proper phrase, ठीक है, rightful phrase. Appraise, तारीफ करना, estimate the value of, appraisal. अच्छा, अप्रेज का मतलब तारीफ करना भी है, लेकिन यहाँ पे इसकी मीनिंग है अप्रेज करना, यानी अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब है किसी चीज़ के वैल्यू निकालना। कस्टम्स में जब कोई चीज़ बाहर से आती है तो इसकी वैल्यू का अप्रेजल होता है और उस पर टैक्स का भी अप्रेजल होता है, तो उसको अप्रेजल कहते हैं। और ये लोग करते हैं, BR वाले इंस्पेक्टर्स करते हैं। एग्जाम्पल, it is difficult to appraise old paintings. It is easier to call them priceless.